ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव है कि आज फंक्शंस के टॉपिक का आगाज़ करेंगे और फंक्शंस का इंट्रोडक्शन भी लेंगे। और फंक्शंस इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स विच इज़ इन ओ लेवल्स एज वेल, बट ओ लेवल्स में बहुत ज़्यादा कम है। और एएस के अंदर और जो आईजीसीएसई है उसके अंदर भी फंक्शंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा माइनर है। बस एएस सॉरी आईजीसीएसई के अंदर जो है थोड़ा सा कॉम्पोजिट फंक्शन का एलिमेंट है, और बाकी काफ़ी बेसिक फंक्शंस है ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के अंदर। बाकी यहाँ फंक्शंस का बहुत एडवांस वर्जन है और बहुत कुछ हमें इंशाल्लाह सीखना है और बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। इसकी तो एक्सप्लेनेशन भी आप समझे बहुत अच्छा खासा टाइम लेगी, और उसके बाद जब सवालात की बात आएगी तो उसके सवालात भी भरपूर होंगे। और ये वो टॉपिक है जो क्वाड्रेटिक के फौरन बाद करवाया जाता है। इसकी वजह, व्हाट इज द रीजन व्हाई आर वी कवरिंग दिस राइट आफ्टर क्वाड्रेटिक्स? दिस सीक्वेंस is defined in the syllabus as well. If once first quadratic is coming in the syllabus, and then comes functions. So if we talk about functions, then every other question of functions involves some of the questions of some of the parts of quadratics. हर function के सवाल में कुछ quadratic के parts भी involved हैं, right? चलें, अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन कहते किसे हैं? व्हाट इज अ फंक्शन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन? अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रिलेशन in which each element x of x is mapped to exactly one element y of y. And the simple example is fx is equals to 2x plus 1. This fx equals to 2x plus 1 is a linear function, and every linear function is a one-to-one function. So the first is, firstly, if we check out, I have bolded this each element as well as exactly one element. What does this mean? क्या मतलब इसका? फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रिलेशन। फंक्शन है एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक और रिलेशनशिप। किसके दरमियान रिलेशनशिप? एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप। जैसे वी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी look at the equation y equals to 2x plus 1. When we are going to input x, we are going to get y. If we are going to put in y, we are going to get x. This is the usual phenomena. But what we say, x is the independent variable, y is the dependent variable. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेरिएबल आता है ना, वी कॉल इट इंडिपेंडेंट, एंड जो वर्टिकल पे आता है वी कॉल इट डिपेंडेंट। क्या मतलब इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब जो चीज बदलेगी, और डिपेंडेंट मतलब जो उसकी बेसिस पर उस पर डिपेंड करेगी। लाइक इफ वी से वी आर डिपेंडेंट अपॉन टाइम, टाइम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन अस, टाइम इज इंडिपेंडेंट। वेदर वी वर्क हार्ड और वी स्लीप, टाइम विल पास अवे रैपिडली। टाइम वक्त तेजी से गुजरेगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम कॉन्स्टेंटली गुजरेगा, उसे किसी की परवाह नहीं है। आप बोले कि मैं आज काम नहीं कर रहा, घड़ी तो रुक जा, नो, द टाइम विल नॉट स्टॉप, टाइम इज इंडिपेंडेंट। Similarly, if we talk about functions, then it is basically a relationship between x and y. आसान भाषा में, this is a relationship between x and y. Each element x of x is mapped to exactly one element y of y. Now this capital X is known as the domain. This capital X is known as the domain. This capital Y is known as the range or image set. Every value of X that we input is known as the domain value. And every single value of Y that we get is known as the image. अब थोड़ा सा यहाँ समझिए इस बात को। Each element X of X is mapped to exactly one element Y of Y. Domain का हर element, every element of the domain is mapped to exactly one element of the image. Every element of the domain is mapped to exactly one element of the image set. हर x को डालने पर exactly एक y आएगा. Every x value has exactly one y. अगर कभी एक x वैल्यू पे दो y आ जाएं, इसका मतलब वो रिलेशनशिप फंक्शन नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नोट फॉर्म में लिखा हुआ है। ईच वैल्यू इन द इमेज सेट इज नोन एज द इमेज। ये जो इमेज सेट के अंदर हर वैल्यू होती है ना, सिंगल वैल्यू ऑफ वाई, उसे कहते हैं इमेज।
और every domain value should have exactly one image, और हर डोमेन की exactly one image होनी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, exactly one image। पहले ये समझ लें कि जो x होता है ना, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें जो x होता है, that x is the domain and y is the range। और हर x वैल्यू की, हर x वैल्यू का एग्जैक्टली एक y होना चाहिए। अब मुझे कोई कहे कि कुछ x वैल्यूज ऐसी हैं जिसका कोई y नहीं है, तो आई विल से दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। कोई मुझे कहे एक x वैल्यू ऐसी है जिसकी दो y है, तो आई विल से दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ फंक्शन। तो फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट, it is mandatory requirement that every domain value should have exactly one image। अच्छा कमाल सुने, if we talk about the entire domain, many single values of x, the single values are also called domain, and many values together are also called domain। But if we talk about range or image set, single value is known as an image, and the entire group of y values are known as the range, or we call it image set। सिंगल एक्स वैल्यू हो या तमाम एक्स वैल्यूज हो, हम उसे डोमेन ही कहते हैं। लेकिन रेंज और इमेज में ये फर्क है कि सिंगल वाई वैल्यू होगी तो वी विल कॉल इट इमेज, लेकिन अगर बहुत सारी वाई वैल्यूज होंगी तो उसे हम रेंज या इमेज सेट कहेंगे। उसूल लेकिन याद रखना है, हर एक्स वैल्यू की एग्जैक्टली वन इमेज होती है। एवरी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन इमेज, नीदर मोर देन वन नॉर लेस देन वन। ना एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, ना एक से कम हो सकती है। तो ये कंडीशन याद रख लें। कोई आपसे पूछे फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, आप बोलेंगे भाई सर ने हमें यही सिखाया है, कॉन्सेप्ट भी यही है, कॉन्सेप्ट यही है, सर ने ये सिखाया है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, यही सिखाया है भाई। कॉन्सेप्ट यही है कि एक एक्स के दो वाई नहीं हो सकते, एक एक्स का एक वाई होना चाहिए, हर एक्स का एक वाई होना चाहिए, ये कंडीशन है। अच्छा एक एक्स के दो वाई नहीं हो सकते, लेकिन एक वाई के दो एक्स हो सकते हैं। मतलब दो एक्स जो है वो सेम वाई को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि हर डोमेन वैल्यू की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन हर इमेज वैल्यू का एक डोमेन होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं। तो फोकस हमारा डोमेन पर है। अच्छा अब लीनियर फंक्शन वन टू वन क्यों होता है, क्योंकि a one-to-one function is a function in which every single domain value has exactly one image and every single image value is mapped to exactly one domain। एक x का एक y और एक y का एक x, ऐसे रिलेशनशिप को वन टू वन रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसमें अगर आप लीनियर फंक्शन की मिसाल लें, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इफ यू आर गोइंग टू पुट इन वन, डालें इसमें वन, तो टू टाइम्स वन प्लस वन इज थ्री, तो वन डालने पर थ्री आ गया, इसका मतलब वन इज द डोमेन वैल्यू, थ्री इज द इमेज। when we are going to substitute 2, 2 times 2 is 4, 4 plus 1 is 5, so inputting 2 we get 5, 2 is the domain value, 5 is the image। when we input 3, 2 times 3 is 6, 6 plus 1 is 7, when we input 3 we get 7, 3 is the domain value, 7 is the image। Many domain values are combined, and even then we call it a complete domain। Single value or multiple values together, we call it domain। Single y values we call image, all the y values together we call range, or we call image set। Now this range is most commonly used, examiner asks us to find the range, so whenever we are told to find the range, we will quickly recall that the range means values of y are to be found। How to find the range? We are going to study that, inshallah. I'm going to cover every single concept one by one. So this is the introduction. Now, if I ask you, determine which of the following relationships represents a function. First, let us focus on the first four examples, and then for the fifth, sixth, and seventh example, I will tell you something else as well. So over here, we are clear with the definition. Each element x of x is mapped to exactly one element y of y. Every domain value should have exactly one image, neither more than one nor less than one. Note, each value in the image set is known as the image,
and every domain value should have exactly one image. ये बात मैंने आपके सामने रख दी. Determine which of the following relationships represents a function. Now, whatever definition I have told you, just focus on the definition and answer the questions below. This example number 1. Determine which of the following relationships represents a function. Which of the following relationships is a function? If it is a function, write yes, it is a function. If it is not a function, then write it is not a function. So can you people tell me that if I talk about the first one, is this relationship a function? If yes, then okay. No need to tell the reason. If it is a no, then you also have to support it with the reason. Okay, why are you saying that it is not a function? Okay, so participate and tell me, okay, is this number 1 example a function or not? Is it a function or is it not a function? Everyone to participate. बहुत जबरदस्त. Very good. Excellent. All answers are perfect. No, it is not a function. Yes, no, not a function. Determine which of the following relations. This is not a function. If the examiner is asking you why is it not a function, as because x has more, because uh, one x value has more than one image. One domain cannot have two images because one single value of x has two y values. Yes, all are correct. हर अंदाज सही है. Not a function, as domain value 1 has two images which is, but this is the reason, not a function, as domain value 1 has two images. Domain value 1 has two images, which should not be the case. For it to be a function, every single value of the domain should have exactly one image. Right? Moving forward towards the second example. Very good, students. If we talk about example number 2, is it a function? Is it a function? The correct answer is a no. No, it is not a function. Why? Because the domain value 1 has one image, the domain value 3 has one image, but the domain value 2 has no image. This is not possible. Every value of the domain, every single domain value should have exactly one image, neither more than one nor less than one. So if a particular domain value has no image, that means it is not a function. So again, we will say not a function. Not a function, as domain value 2 has no image. This is wrong. Students have to be on time. Repeating entirely is basically waste a lot of time. Please try to ensure that you are punctual. Still then I'm repeating.
अगर कोई लेट हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा इसका ख्याल रखें कि आप लोग वैसे रिकॉर्डिंग देखें, लेकिन जाहिर सी बात है शुरू में हुआ है टॉपिक तो फिर बीच में आने में मसला है, तो मैं इसलिए रिपीट कर देता हूँ. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव understood right now is every a function is a relationship in which every single value of x should have exactly one value of y. The value of x is known as the domain, the x values are known as the domain, and the y values are known as the range. So a single value of y is known as image, and more than one values of y are known as range in combination. मैं तकरीबन 15 मिनट से ये कॉन्सेप्ट मुसलसल रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा क्विक हूँ, वरना मुझे 10-15 मिनट और लग जाएंगे सेम चीज के ऊपर. तो जस्ट ट्राइंग टू रिकैप, बाकी डिटेल में थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा बाद में रिकॉर्डिंग देखकर. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट सेइंग दिस कि हर x वैल्यू का एग्जैक्टली एवरी x वैल्यू शुड हैव एग्जैक्टली वन y वैल्यू. Every single value of x should have exactly one y value, neither more than one nor less than one. So if a single value of x has two images, that is not possible. It means it is not a function. Or if a particular domain value has no image at all, then also it is not a function. So for a function to exist, every domain value should have exactly one image. Exactly one image. Domain means values of x, range means values of y, and single value of from range is known as the image. x की एक वैल्यू हो या एक से ज्यादा, उसे हम डोमेन ही कहते हैं, लेकिन y की एक वैल्यू को इमेज कहा जाता है. एंड इफ देयर आर मोर देन वन वैल्यूज ऑफ y, then we call it range. Like in totality, all the values of y combined together are called as range. So over here in the first example, the domain value 1 has two images, which is not possible. So we say that not a function as domain value 1 has two images. Domain value 1 has two images, which should not be the case, because and if the case is like that, then the relationship is not a function. Then if we talk about example number 2, it is again not a function. Why? Because there's one single value of x which is left out. Every single domain value should have exactly one image, but the domain value 2 has no image over here. So we are saying it is not a function as domain value 2 has no image. Moving towards the third example. Is the third example determine which of the following relationships represents a function? So if we talk about example number 3, is it a function or not? Is it a function or not? Okay, great. Yes, this is a function. Yes, it is a function. We only had to tell whether it is a function or not. But when it was not a function, I was mentioning the reasons as well, because at times it is asked, why is it not a function? What is the reason? So we can tell the reasons as well. Over here, we say, yes, it is a function. It is a function because every single domain value is exactly one image. Over here, we see that there is one value in the image set which has no domain, but that is not a problem because the definition of function is focusing on the domain. The definition of functions is focusing on the domain. Every single value in the domain set, every single value in the domain should have exactly one image. But if some image value is not mapped to any domain, then that is not a problem. Like over here, the image value, the image 11 is not mapped to any domain value. That is not a problem. Every single value of x should have exactly one value of y. So we can see that yes, 1 has image y, 2 has image 9, 3 has image 13. Every single domain value should have exactly one image. So yes, 1 has one image, 2 has one image, and 3 has also one image. This means it is a function. If we talk about number 4, is it a function? Is it a function? Yes, it is a function. Yes, it is a function. Why is it a function, sir? Please elaborate. Yes, I am.
So I already, sorry, when I was explaining, I have already told that every single value should have exactly one image. So one domain, the domain value 1 has one image. The domain value 2 has also one image. The domain value 3 has also one image. As per the definition of functions, every single value should have exactly one image. I have not said every single domain value should have a unique image. No, I have not said this. Every single domain value should have a unique image. I have not said this. So the domain value 1 has image 5. The domain value 2 has also image 5. But as per the definition, every single value should have exactly one image. So single domain value 1 has exactly one image. Domain value 2 has exactly one image. Domain value 3 has exactly one image. This means, as per the definition of function, this is a function. This is a function. Yes, it is a function. कौन सा फंक्शन कहलाता है आपको पता है ये? This is called many to one function. This is called many to one function. Many to one means many domain, one image. Many domain, one image. Many to one function. Many to one relationship is a function. One to many relationship is not a function. So over here, if we say this is one to many, one domain, many images. One domain, many images. One to many is not a function. Over here, I'm reinforcing it. One to many relationship is not a function. Many to one relationship is a function. Over here, notes as well, it's written. One to one relationship is a function. I've already told you what is one to one. This is example of a one to one function. One domain value, exactly one image. And then every domain value has a unique image. So one domain, one image, one image, one domain. But over here, one domain, one image, but a single value of image has two domains. So domain value 1 also has image 5 and domain value 2 has also image 5. So this, as per the definition, it is a function, but it is a many to one function. So one to one relationship is a function. Many to one relationship is also a function. But one to many relationship is not a function. If you cannot read it, yes, X is the domain and Y is the range. And single value of Y is known as the image. सही है जी. तो ये 4 एग्जांपल्स हो गए. अच्छा, अब जरा सुनिएगा कॉन्सेप्ट. इफ वी टॉक अबाउट ग्राफ्स, ये तो सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपके सामने ये चीज रख दी, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट एग्जांपल्स 5, 6 and 7. Now over here we draw a graph. Sorry, over here there is a graph, and on the basis of the graph we have to tell as to whether the relationships is the given relationship is a function or not. So now we know that on the horizontal axis x comes. So x is the domain. X is the domain and y is the range. So what we need to see now, I'm telling you how can we determine that whether a particular graph represents a function or not. If you draw a vertical line and if a vertical line intersects at exactly one point, अगर एक vertical line बनाई जाए और vertical line exactly one point पे intersect करे, if a vertical line intersects at exactly one point, then this means that the given relationship is a function. If a vertical line intersects the graph at more than one point, then this means it is not a function. So a single vertical line should have exactly one point of intersection with the given graph. So if we are going to draw vertical line, no matter where we draw vertical line, each vertical line will intersect the graph
at exactly one point. So if that is the case, we will say yes, it is a function. अच्छा, ये वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? क्या मतलब वर्टिकल लाइन? वर्टिकल लाइन का मतलब ये बेटा कि इफ लेट सपोज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स इज चोजन, लेट सपोज एक्स इज 1, then that particular value of x will have how many images? So if the vertical line intersects at one point, this means it will have exactly one image. If a vertical line intersects at more than one point, like over here, this means one x value will have two y values. Now this means one to many relationship, and one to many relationships are not function. One to many relationship is not a function. So if a vertical line intersecting at one point, this means one single domain value has exactly one image. If a vertical line intersects at more than one point, this means that a particular x value has more than one image, which is not possible, and that particular relationship will then not be a function. ये लिखा हुआ भी है नोट फॉर्म में, फॉर अ फंक्शन टू एग्जिस्ट each vertical line must intersect the graph at exactly one point, but concept remains the same. concept वही है जो मैंने आपको सिखाया. वर्टिकल लाइन की क्यों बात हो रही है? क्योंकि x वैल्यू पे जब y चेक करना होता है तो हम वर्टिकल लाइन ही तो बनाते हैं. तो हर वर्टिकल लाइन बनाने पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए. अगर एक से ज्यादा आ गया, this means one domain value has more than one image, which means that it is not a function. So over here we'll say yes, it is a function. Yes, it is a function. Because if we are going to draw vertical lines over here, no matter where we draw the vertical lines, they will always intersect at exactly one point. Then if we look at example number 7, if we are drawing any particular vertical line, then that is intersecting at 2 points. So this means one x value has two y values. It's just like this. There is one single value of x. A value of x has two y, y1 and y2. So this is one to many relationship, which means it is not a function. इसीलिए हम vertical line बना के check करते हैं. इसको कहते हैं vertical line test. Vertical line intersecting at one point, it is a function. Vertical line intersecting at more than one point, it is not a function. तो हम कहेंगे not a function. Not a function. As one domain value ये भी कह सकते हैं it is not a function because this is a one to many relationship, and one to many relationships are not functions. Not a function. और बल्कि मार्किंग स्कीम रिसेंटली अगर हम देखें तो वो वर्टिकल लाइन का भी जिक्र कर रहा है. इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, बिकॉज अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स. ये तक भी एक्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आई वुड से कि आप खाली वर्टिकल लाइन अगर बोल भी रहे हैं, वर्टिकल लाइन की बात कर भी रहे हैं, तो उसमें एम्फेसाइज करें इट इज नॉट अ फंक्शन एज वन डोमेन वैल्यू हैज मल्टीपल इमेजेस या मोर देन वन इमेजेस या 2 इमेजेस. It is not a function. This relationship is not a function as one domain value has multiple images. सही है? Because a vertical line intersecting at 2 points, लिहाजा एक डोमेन वैल्यू की एक से ज्यादा इमेजेस हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है. So this is all the relationships, all the notes are also covered. One to one relationship is a function. Many to one relationship is a function. One to many relationship is not a function. For a function to exist, each vertical line must intersect the graph at exactly one point. ये जो है मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई है, और ये मैंने जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इफ यू मस्ट हैव रिटन इट ऑलरेडी एज वेल, बट एक्नॉलेज, हैव यू अंडरस्टूड?
Okay, great. Chale, moving on towards finding the range. So I've already told that if you are told to find the range of a linear function or range of any particular function, this means the values of x will be given. Now, this is a usual requirement. The examiner gives us a function, gives us the domain, and asks us to find the range. Domain given है, function भी given है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप range निकालो. Function given, domain given, and we are told to find the range. Now, how can we do that? So let's start with the very simple function. The simplest functions, the simplest of all the functions is a linear function. So we are starting off with the range of a linear function first. For finding the range of a linear function, we substitute the endpoints of domain in the given function. What needs to be done? क्या करना है भाई? क्या करना है? If we want to find the range of a linear function, we will substitute the endpoints of domain in the given function. Endpoints का मतलब जो starting point है या ending point है उसको डालना है. We'll look at different examples and then we'll understand what is the meaning of this. So if we talk about example number 1, then the function is fx equals 2x plus 3 and it is defined for the domain 1 to 5. Now what does this mean? X is greater than equals to 1 and less than equals to 5. So x lies between 1 and 5. X is greater than equals to 1 and less than equals to 5, which means x lies between 1 and 5. And we are told to find the range of f. Now what we can do? The instructions tells us substitute the endpoints of domain in the given function. So let's substitute 1 inside the function. Then we'll substitute 5 inside the function. And then we'll see what answers we get. So if we are going to substitute 1 inside, f bracket 1 is equals to 2 times 1 plus 3. And we get 5. If we are going to substitute 5 inside the function, we are going to get 2 times 5, 5 times plus 3. This makes it 13. Substituting 1 gives us 5. Substituting 5 gives us 13. So if x lies between 1 and 5, then y lies between 5 and 30. x वैल्यू डाली, y की वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास इसका मतलब जो फंक्शन है उसकी रेंज होगी 1 से 5 के दरमियान. The range of fx lies between 1 and 5. So this is going to be my final, sorry, my bad, wait. Between 5 and 13. So I need to emphasize one more point. Whenever we are given the domain is always in terms of x, but range is always with the name of the function. If we are giving the range of fx function, we'll use fx. If we are giving the range of gx function, we will write gx. If we are giving the range of hx function, then we'll write hx. In a particular question, there can be more than one functions as well. At times, there are 2 or 3 functions given in the question, fx, gx, and hx. अच्छा, हर function की एक unique identity है. And the identity of a function not only depends upon the function, but it also depends upon its domain. ये आगे लिखा हुआ है बेटा, नोट फॉर्म में सब लिखा हुआ. डोंट वरी, ये चीज मैंने कहीं ना कहीं लिखी होगी. कहीं ना होगी, आई एम नॉट श्योर. शायद कहीं मैंने लिखा होगा, अभी मुझे नजर नहीं आ रहा. In case of a linear function, gradient, in case of any confusion, yes, over here I cannot see. I might have written it somewhere or the other. What I've said is the domain is always expressed. The domain is always written with the name of x. The domain is always defined using x. And the range is always defined using the name of that function. The domain is always defined using x. If the domain is of fx function, then also we say x lies between this and that.
If the domain is of hx function, then also we write in terms with the name of x only. But if we talk about the range, then in while giving the range, we use the name of the function. डोमेन किसी भी फंक्शन का होगा ना, एक्स का नाम ही यूज हो रहा होगा, एक्स ही यूज हो रहा होगा, लेकिन जो रेंज होगी ना, उसके लिए फंक्शन का नाम होगा. तो फंक्शन एफ एक्स लाइज बिटवीन 5 and 13, and the domain of function x is from 1 till 5. If you talk about example number 2, fx is 3x minus 1. For x is greater than equals to 3. Find the range of f. अच्छा, अब जरा ये जरा देखिएगा. The domain 1 till 5 is a finite domain. It is a finite domain. So the range is also finite. Over here, if you look at the domain, this is infinite. This is infinite. Why? Because the domain x is greater than equal to 3 means x can take any value that is 3 or greater than 3. It can be 100, it can be 1000, it can be 10,000, it can be 1 million, it can be 1 billion, and the mathematical counting goes on and on and on. It never stops. So if fx is 3x minus 1 and the given domain is infinite, then the range will also be infinite. But how can we give the infinite range? We have to check the trend. We have to check the trend. What we do, if the domain is like this, the instruction that we have been given is substitute the end points of domain in the given function. So this 3 is the end point. The starting point is also called the end point, and the ending point is also called the end point. भाई एक रॉड है, मैं आपको कहूँ इसके एंड पॉइंट्स कौन से, तो आप बोलेंगे कौन सी तरफ का एंड, पूछेंगे ना, राइट वाला है लेफ्ट वाला, मैं कहूंगा भाई दोनों एंड्स, बोथ एंड्स, both ends. So if we talk about the range of f over here, then it is going to be infinite because the domain is also infinite. The domain has a starting point, but there is no ending point. So if that is the case, what we can do is we check the trend by substituting few of the values, because we have the starting point, but we don't have the ending point, right? So what we can do is we can just check the trend that if we are going to increase x, what is going to happen with the value of y. Always remember, x is the domain, y is the range, and in place of y, the name of fx is used. जो fx है ना, वो y है. कोई भी फंक्शन होता है ना, fx हो, gx हो, hx हो, वो y होता है. x, when we substitute x, we get y. So over here, if we are going to substitute 3, then 3 times 3 minus 1 is basically 9 minus 1, which is 8. 3 times 3 is 9, and 9 minus 1 is 8. Now, if x is 3, y is 8, we know this, right? But if x increases, will y also increase? So for that, we'll have to check the trend. There's a shortcut as well to judge it. In case of a linear function, I'm going to tell that as well. But the simplest way is, whenever you are stuck, whenever you are facing problems, just check out the trend. Trend का मतलब क्या है भाई? If x is greater than equals to 3, तो 3 या उससे बड़ी वैल्यूज है x की, तो डाल के देख लें, सब्स्टिट्यूट करें. तो if we are going to substitute 4, तो 3 times 4 minus 1, 12 minus 1 is 11. फिर मैंने कहा चले 5 डालकर देखते हैं. ऐसे तो एक डाल के देखना भी काफी हो गया था. 3 times 5 minus 1 is equals to 14. अब आप देखें ट्रेंड. When we are increasing x, when x increases, what is happening to the value of y? Y is also increasing. So it's directly proportional. So when x increases, y also increases. And if we have to give the range, then we will say fx is greater than equals to 8. Why? Because if x is 3 or more than 3, then when we are going to substitute 3, the y value is 8. So if x increases from 3, y increases from 8. So 3 or more than 3, 8 or more than 8. So the range is fx is greater than equals to 8. And we can see that this particular
this particular range is infinite. So for the infinite domain, we got an infinite range. It's infinite. The domain was infinite. The domain was infinite. The range is also infinite. अच्छा, शॉर्टकट जो मैं कह रहा था वो क्या है? इज इट एसेंशियल? लीनियर फंक्शन के केस में ट्रेंड चेक करे बगैर भी काम हो सकता है. कैसे? बाय चेकिंग द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, because it is of the form y equals to mx plus c. The coefficient of x is the gradient. So over here the gradient is 3. So if the gradient is 3, if 3 is the gradient m is 3, this means positive gradient. So positive gradient means directly proportional. Directly proportional. So this means that if x increases, y will also increase. So if there in the domain it's greater than equals to, then in the range will also there be in the range also there will be greater than equals to. तो यहाँ पर ट्रेंड चेक नहीं भी करते तो मसला नहीं था, कि ग्रेडियंट की बेसिस पे पता चल सकता था. ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ेगा. वी मस्ट हैव हर्ड पॉजिटिव ग्रेडियंट मींस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. Upward sloping line. This means that when x increases, y increases. Upward sloping line means directly proportional. लेकिन अगर ये बात मैं भूल जाऊं और ये खाली लीनियर फंक्शन में वैलिड है, हमेशा थोड़ी वैलिड है. So if let's suppose the function is other than linear and if we are stuck, then what will happen if x increases? Will y increase or will y decrease? In that case, we will have to check out the trend. इंशाल्लाह मजीद एक्सपोजर बढ़ेगा तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट बेटर. दो एग्जांपल्स डील हो गए. नाउ fx is negative 2x plus 5 for x is greater than 2. Find the range of f. अब अगर हमारा x greater than 2 है तो मेरी रेंज क्या होगी? क्या होगी रेंज? तो पहले ये बताएं कि आपके जहन में क्या आता है, कि क्या मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा फंक्शन के अंदर या 2 के अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूट करूंगा? विल आई सब्स्टिट्यूट 2 or will I substitute any other value of x? Yes, participation is required. चलिए, बहुत सारी पार्टिसिपेशन आई हैं एंड द मोस्ट ऑफ द आंसर से that we are not going to substitute 2 because the domain is greater than 2. So we will not substitute 2. हम 2 नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम 2 के अलावा कुछ और सब्स्टिट्यूट करेंगे. यही आप लोगों ने कहा ना. लेकिन एक गलती कर दी आप लोगों ने. ये कभी लिखा हो ना कि x belongs to real number, नो, x is an integer, तो इसका मतलब होता है कि 2 के बाद 3 आता है. अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं और नंबर लाइन पे इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नंबर लाइन and if I am going to draw a number line, then who says that after 2 directly 3 comes? Which value of x comes after value x equals to 2? If x was an integer, then after 2 comes 3, after 3 comes 4. But if it is not written that x is an integer, the examiner is very, very clear. X cannot equal to, x is not equal to 2. This is right. But if x is greater than 2, which value of x will you substitute? Substituting 3 is not right. Because after 2, we don't have 3 only. In the middle of 2 and 3, there are millions and billions of values. Sir, millions and billions, how can you say that? 2.01 is also a value. 2.00001 is also a value. 2.0015 is also a value. तो ये तो चलती रहेगी वैसी गिनती, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाते जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है. तो भाई 2 के बाद एग्जैक्टली क्या आता है मुझे नहीं पता, लिहाजा याद रख लें. गलती आप लोगों की पार्टिसिपेशन का मकसद क्या था?
I ask you to participate so that even if you are getting, even if you are making a mistake, at least you know that you have committed a mistake, and in future you don't repeat that. So if x is greater than 2, over here it is not written that x is an integer. Please make it a point. If it is not written that x is an integer, if it is not written that x is an integer, then after 2, 3 does not come. After 2, we can have 2.01. We can have 2.001. We can have 2.0000001. So, sir, which value are we going to substitute? The best thing that we have to do is we have to substitute 2 only. We have to substitute 2 only. तो हम 2 ही को substitute करेंगे. -2 times 2 plus 5. But sir, ये तो गलत हो गया. तो गलत हो गया. 2 डालने पर 2 x was greater than 2. It was not equal to 2. Then why are we substituting 2? Because we don't know which value comes right after 2. But you know how are we going to cater to this? X is greater than 2, but x is not equal to 2. The domain value 2 is not included in the domain. This means we are not going to include the image value 1 in the range. ये 2 वैल्यू जो है ये डोमेन का पार्ट नहीं है, लिहाजा हम रेंज देंगे 1 के हिसाब से ही, बट उसमें हम इक्वल्स टू का साइन शामिल नहीं करेंगे. As 2 is not included in the domain, 1 will not be included in the range. अब यहां पर जो जवाब आया, we will say fx is greater than 1. No, over here fx is less than 1. Over here fx is less than 1. अब ये क्या चक्कर है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा. तो फिर मैंने एक बात बताई थी कि भाई डायरेक्ट आंसर मत देना. डू नॉट गिव आंसर्स डायरेक्टली. फर्स्ट check out the trend. First, check out the trend that if we are going to increase x, will y also increase or will y decrease? So if x increases and y decreases, then there's an inverse relationship. और मैंने ये भी बताया कि एक शॉर्टकट भी है अगर हम डायरेक्टली ग्रेडियंट की वैल्यू को देख ले. So over here, the gradient is -2. Negative gradient. So negative gradient means inversely proportional. Inversely proportional. नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब है कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब x बढ़ने पर y कम होगा. चेक कर लें सर, ट्रेंड चेक करेंगे तो ज्यादा सुकून महसूस होगा. ट्रेंड चेक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 2.001 डालें. 2 के बाद 3 डाल सकते हैं क्योंकि ट्रेंड चेक करना है. सब्स्टिट्यूट करें 2 के बाद 3, -2 times 3 plus 5. We get -1. Now check out. x 2 से 3 हो गया, y कम होके 1 से -1 हो गया. Now x will constantly increase, y will constantly decrease. The bottom line, when we are dealing with a linear function, if the domain is finite, the range will also be finite. If the domain is infinite, the range will also be infinite. But if the domain is increasing, will the range also increase or will it decrease? That will depend upon the gradient of that particular linear function. If the gradient is positive, then when x increases, y or fx also increases. If it is a linear function, and if the gradient is negative, then when x increases, y decreases, and vice versa. This means if x decreases, the y will increase. So for that, the shortcut is we check out the gradient only. But if let's suppose we are forgetting this concept of gradient, we can always check out the trend. Trend का मतलब क्या है भाई? Multiple values domain की डालें. Substitute multiple values of the domain and check out if when we are increasing x, whether y is increasing or whether it is decreasing. And you will come to know how you have to give the answer. So over here, the answer of range is fx is less than 1. This is going to be my final answer. So now check out. 2, we have substituted 2 and we have got 1. As 2 is not a part of the domain, so 1 is also not a part of the image.
Had it been greater than equals to, here we would have written less than equals to. Less than equals to, because there is only greater than sign over here. So over here it is only lesser than sign. x 2 से बढ़ेगा तो y 1 से कम होगा, क्योंकि 2 डोमेन में शामिल नहीं है, लिहाजा 1 रेंज में शामिल नहीं होगा। ये मेरा तीसरा एग्जाम्पल भी कवर हो गया। चौथे एग्जाम्पल की जाने आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1। दिस इज अ लीनियर फंक्शन, बट ओवर हियर इट सेज, ये टर्मिनोलॉजी भी सीख लें, इसको पढ़ना कैसे होता है। दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू, दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू, और इज एन एलिमेंट ऑफ, ये भी यूज होता है, इज एन एलिमेंट ऑफ। सेट्स में आपने शायद पढ़ा होगा, इज एन एलिमेंट ऑफ। यूजुअली हम बिलोंग्स टू कह रहे होते हैं, इसको इस तरह पढ़ा जाता है, x is an element of real number, और we say x belongs to real number। belongs to वाली टर्मिनोलॉजी ज्यादा बेहतर फिट इन होती है और ज्यादा ज्यादा समझ में आती है। इज एन एलिमेंट ऑफ भी सही है, लेकिन ज्यादा आसान belongs to वाली टर्मिनोलॉजी है। तो x belongs to real number। सवाल, सर ये रियल नंबर क्या होते हैं? हर वो नंबर जो एग्जिस्ट करे, every number that exists is a real number। Sir, can you give an example of a non-real number? Yes, root of -1 is not a real number. Root of -5 is not a real number. Something that will not give an answer. If we are going to input in the calculator, we are going to get a math error. And if we are going to solve root -1, then in A2 we are going to study one topic named complex numbers. We are going to learn how negative numbers inside the root can also come out by using the word iota। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक है, A2 में एक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें आयोटा की टर्मिनोलॉजी यूज होती है, किस तरह से नेगेटिव नंबर को रूट से निकाला जाता है या उसको आयोटा फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है आयोटा। यहाँ पर अभी हमारे सिलेबस डोमेन में ऐसी कोई चीज नहीं है, लिहाजा करंटली वी आर फोकसिंग ऑन रियल नंबर। तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में सब आ जाते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, fractions, whole numbers, integers, decimal numbers, rational numbers, irrational numbers, all kinds of numbers. So real numbers means all kinds of numbers. So x belongs to a real number means the domain is infinite. There is no restriction. एक infinite वो होता है जो हमने यहाँ देखा, starting from 2 and never ending. But over here, this particular domain has no starting point. It has no ending point. ये तो infinite की सबसे आला मिसाल है, इससे बड़ा डोमेन नहीं हो सकता। सबसे बड़ा डोमेन x belongs to real number है। x can take any real value। याद रखें, in case of a linear function, if the domain is x belongs to real number, the range will also be fx belongs to real number। but ये तमाम functions के केस में नहीं होता, हम आगे सीखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह में हमेशा ऐसा नहीं होता। But in case of a linear function, if x belongs to real number, then fx will also belongs to, then fx will also belong to real number। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा fx belongs to real number। This will be my final answer। These are the 4 examples that I've covered। I'm just going to check out the note and then I'll ask as to whether you have understood each and everything. In case of a linear function, if the domain is finite, the range will too be finite। Similarly, if the domain is infinite, the range will too be infinite। I've already explained this point। If the gradient of a linear function is positive, the domain and range will be directly proportional। One increases, the other also increases। One decreases, the other also decreases। If the gradient of a linear function is negative, the domain and range will be inversely proportional। This means one increases, the other decreases। One increases, the other decreases। In case of any confusion while finding the range, कभी भी रेंज निकालते वक्त फंस जाएं, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो क्या करना है भाई? ट्रेंड चेक करना है। सब्स्टिट्यूट फ्यू वैल्यूज ऑफ एक्स इन द गिवन फंक्शन एंड चेक द ट्रेंड, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये पॉइंट जो है भाई बड़ा कीमती है। जब जब फंक्शन की रेंज निकालने में फंस जाएं तो आपने क्या करना है?
डोमेन को देखते हुए कुछ वैल्यूज फंक्शन में डालनी है और देखना है कि y की वैल्यूज किस डायरेक्शन में जा रही हैं, and accordingly you have to give the answer. So you have to substitute the values of x inside the function, and then you have to check the trend. If it's an increasing trend or a decreasing trend, we come to know and we'll give the answer accordingly. We are new to the functions topic. We are new to finding the range of a function. So that is why we don't have that much exposure. But with the passage of time, inshallah, the exposure will increase. But this fourth bullet point is extremely important. Whenever you are stuck, the trend can be checked, which will, inshallah, tell you what the range of a function is. With more examples, with more past papers in future, we are going to, inshallah, master this skill as well of giving a range. Okay, so these are the 4 examples which explained how to find the range of a linear function. This is the simplest of all the functions, and we have understood all the important points of this function. I need an acknowledgement as to whether each one of you has understood what I've explained. If there are any confusions, you can raise your hands and I'll definitely answer that. If it's clear, please let me know that yes, you are clear. The fourth one says x belongs to a real number. So if x belongs to a real number, then there is no single value of x that has been given. X can take any real number. So just try to imagine if x can be any number. It can be negative 1,000, it can be negative 100,000, it can be positive 100, it can be positive 100,000. X can take any real value, any value, fraction, decimal, whole number. So when there is no single value that we can substitute inside the function, x can take any real value. This means y will also take any real value. So this means if x is 100, fx is 100 plus 1, 101. If x is in negative, then y will also be in negative. If the negativity increases, then the negativity of the y value also increases. So this means when x belongs to real number, fx will also belongs to real number. In case of a linear function, if the domain is x belongs to real number, the range will also be fx belongs to real number. That is something that you need to understand and you need to keep it in mind as well. बहुत कम होता है कि कहीं लीनियर फंक्शन के साथ बिलोंग्स टू रियल नंबर का डोमेन हो और आपसे रेंज पूछी जाए. Usually there are other types of functions in which the domain is x belongs to real number and then you have to give the range. But in those cases we have to deal with it differently. That I am going to explain soon, inshallah. मुझे बताएं पहले यहाँ तक बात समझ आई? Hamza, is it clear now? ओके, एक्नॉलेजमेंट जरूर दे दिया करें. चलें, ये यकीनन आपने लिख भी लिया होगा और जो है वो आपने ये 4 पॉइंट्स भी देख लिए. अब आ जाते हैं रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. ओके, रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन स्टेप्स. Whenever we are finding the range of a quadratic function, the first step, find the coordinates of turning point of the curve. अच्छा देखिए, लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन होती है. लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑल लीनियर फंक्शंस आर वन टू वन फंक्शन. सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन जो होता है ना, वो लीनियर फंक्शन होता है. अब फंक्शन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी हो सकता है, रेसिप्रोकल फंक्शन भी हो सकता है. मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होंगे जो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे. और कोई ऐसे किस्म का फंक्शन होगा जो डिफरेंट आएगा. लेट सपोज किसी ने क्यूबिक फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा हो, क्यूबिक फंक्शन आ गया तो मुश्किल नहीं है. ट्रेंड चेक करेंगे, डोमेन को क्यूबिक फंक्शन में डालेंगे, देखेंगे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है. whenever you are stuck, whenever you are not getting whenever you are not able to recall, तो आप जो है वो ट्रेंड चेक करके रेंज निकाल सकते हैं. कुछ किस्म के फंक्शन जो बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं करने में, या जिसके लिए कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने वन बाय वन करके रखूंगा. तो लीनियर फंक्शन वाज द सिंपलेस्ट वन, just to give you a hang of what the range of a function means. And now moving on towards the range of a quadratic function. Every quadratic function, if we draw a quadratic curve,
then every quadratic curve has a turning point. It's a happy faced curve or a sad faced curve, but every single curve has a turning point, right? Every quadratic curve has a turning point. So whenever we are finding the range of a quadratic function, the first step tells us find the coordinates of turning point of the curve using completing the square, differentiation, etc. टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये होता है कि आप गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस कर. If you are going to express a given quadratic expression into completed square form, then we have already studied this in quadratic. तभी मैंने कहा ना quadratic से कनेक्टेड है फंक्शंस. फंक्शंस के हर पार्ट में, हर सवाल में, तकरीबन सवालात में क्वाड्रेटिक की नॉलेज इनकॉर्पोरेट होगी. जब सवाल देखेंगे तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट्स मुसलसल रिकैप होते रहेंगे. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा. डिफरेंशिएशन अभी हमने नहीं पढ़ी है, ये टेक्निक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एएस के अंदर P1 में, बाद में पढ़ेंगे. बट ये भी एक टेक्निक होती है टर्निंग पॉइंट निकालने की. अभी मैंने नोट्स में जनरली सब कुछ लिख दिया है, सो दैट इवन इफ वन डे बिफोर CAI यू आर रिकॉलिंग, एटलीस्ट यहाँ लफ्ज डिफरेंशिएशन अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त आपको समझ आएगा इंशाल्लाह. तो यहाँ बताना जरूरी था कि टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड, एनी मेथड कैन बी यूज्ड. हाउएवर, this is the common practice of the examiner, that whenever the examiner gives a question of function, then in the first part the examiner asks us to express the given quadratic expression into completed square form. Given quadratic equation को कहेगा इसको completed square form में express करो. एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, कहेगा इसको completed square form में express करो, तो वो मुझे गाइडेंस देगा. एग्जामिनर मुझे गाइडेंस देगा. द गाइडेंस विल बी गिवन बाय एग्जामिनर. कि पहले पार्ट में वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में मुझे करने का कहेगा, तो मुझे वहीं से पता चल जाएगा कि अगले पार्ट में जब रेंज पूछिए तो मुझे उस कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से टर्निंग पॉइंट निकालने हैं. तो मैं क्या कह रहा था, गाइडेंस विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर. गाइडेंस नहीं, सॉरी, रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये गाइडेंस ही होती है कि भाई कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म जब मैं दे रहा हूँ या निकलवा रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन लेटर पार्ट्स, राइट. तो ये गाइडेंस की तरह हो जाता है. बट स्पेसिफिकली आप सवाल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है. तो फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन. अच्छा, जब हमने लीनियर फंक्शन की रेंज देखी थी, the only instruction to find the range of a linear function was substitute the end points of domain in the given function. But over here, the instruction is don't only substitute end points, but also use the coordinates of turning point. तो इसका मतलब burden हमारा यहाँ पर increase हो गया. If we want to find the range of a quadratic function, then we have to be more careful. हमें टर्निंग पॉइंट भी चाहिए होगा और एंड पॉइंट्स को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, इन ब्रैकेट इट्स रिटन इफ एनी. लेट्स सपोज इफ द डोमेन इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका मतलब इसमें तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है. तो जरूरी नहीं है कि डोमेन के एंड पॉइंट्स दिए हुए हों. डोमेन अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इफ एनी. अच्छा, जो नोट है वो मैं पढ़ तो लेता हूँ, बट ये समझ आपको एग्जाम्पल्स करने के बाद ही आएगा. तो आई एम जस्ट रीडिंग इट अलाउड so that you can actually might understand, but you will get a more clear idea of it when we are going to move forward. So note, if the x coordinate of turning point is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. अगर टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डोमेन में शामिल है, तो टर्निंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रेंज में शामिल होगा. If x coordinate of turning point is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है ये आपको मजीद समझ आएगा. ऊपर मैंने लेकिन लीनियर फंक्शन में बताया था कि डोमेन जो लीनियर फंक्शन का हमारा तीसरा एग्जाम्पल था, as 2 was not included in the domain, 1 was not included in the range. क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था, तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं आया. कुछ मिलती जुलती बात है कि अगर टर्निंग पॉइंट हमने निकाल लिया, लेकिन टर्निंग पॉइंट का एक्स डोमेन में ही शामिल नहीं है,
तो टर्निंग पॉइंट के y को रेंज निकालने के लिए शामिल नहीं करेंगे. इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द डोमेन, the y coordinate will also be included. But if turning point of x, if the x coordinate of turning point is excluded from the domain, the y coordinate of turning point will also be excluded from the range. X included to y included, x excluded to y excluded. Now moving on towards the examples, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा clear idea हो जाएगा when we are going to cover the examples. Example number 1. Fx is equals to 2 times x minus 1 whole square plus 3. The examples that I have given over here are all in completed square form. However, in examination questions, as I've already told, the quadratic will be given in any form. And if it is not in completed square form, then in the first part, the examiner will tell us to complete the square and to give it in completed square form, ताकि उससे हम turning point निकाल सकें. लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपको मैं एक स्किल सिखाना चाहता हूँ, वो है रेंज निकालने की स्किल. कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में करने वाली स्किल हम पहले से अपना चुके हैं. वो वी ऑलरेडी नो हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, so we are not going to repeat that skill over here. The only focus, the primary objective here will be to understand how to find the range of a quadratic function. That is why in all the examples I have already given completed square form. So now if we look at the first example, we are given completed square form, we are given the domain x belongs to real number and we have to find the range. सवाल, सर क्या जहां जैसे लीनियर फंक्शन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर होने पर रेंज भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होती थी, क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन में भी ऐसा होगा? जवाब, नहीं बेटा, नो. If domain is x belongs to real number, the range will not be fx belongs to real number. सर ऐसा क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लीनियर फंक्शन तो भाई बेलगाम घोड़ा है. If x increases, y increases. If x increases, y increases. If x decreases, y decreases. But if we talk about a quadratic function, and if we specifically focus on completed square form, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो आप बोलेंगे सर ये एक मिनिमम पॉइंट होगा, 2 की वजह से, पॉजिटिव 2 की वजह से इट इज अ मिनिमम पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या होंगे भाई? टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पार्टिसिपेट करें और बताएं. वेरी गुड. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट आर 1,3. x minus 1 equals to 0 and x minus 1 equals to 0 will give x1 and this plus 3 is the y coordinate. 1,3 are the coordinates of minimum point. सही है जनाब? अच्छा आप सुने, if on the basis of this turning point, if we are going to draw a curve, it will be like that, right? इस तरह का हमारा एक quadratic curve बनेगा, ऐसा ही है. ये हमने एक curve बना लिया quadratic. Now what are the turning point coordinates? This is going to be 1. ये वाला हमारा 1 हो जाएगा and this is going to be 3. This is x and this is y. अब जरा कर्व को देखिएगा, राइट? जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा. if x increases initially y was decreasing, but then when x was increasing y was increasing. देखिए x 0 से जब 1 के दरमियान मूव हो रहा है तो x बढ़ने पे y कम हो रहा है. x इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है. x increases, y decreases. But after 1 x increases, after 1 x increases, y also increases. तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट होगा. ये आपको शायद ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस ओ लेवल में कहा पता भी होगा कि if x increases y decreases the gradient will be negative. If x increases after 1 the x increases, the y also increases. So this part of the curve has a positive gradient.
So if you are going to draw a tangent to the curve, then we'll get a positive gradient. But if before one, if you are going to draw tangent to the curve, then the tangent will have a negative gradient. So if x increases, x increases, y decreases, it's a decreasing function. डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहा जाता है, नेगेटिव ग्रेड होता है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन भी कहते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन वैसे डिफरेंशिएशन में सही से पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स बढ़ेगा, इफ एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, this is inversely proportional. We also call it a decreasing function because x increases, y decreases. right जा रहे हैं, x right की तरफ increase हो रहा है, तो y जो है उस वक्त decrease हो रहा है, तो we call it a decreasing function. बट अगर 1 के बाद बात करें तो 1 के बाद x increase हो रहा है, बट y जो है वो increase हो रहा है, लिहाजा increasing function. तो after x equals to 1 it's an increasing function, and before x equals to 1 it is a decreasing function. तो मैं बता क्या रहा था, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गया, जो मैं बता रहा था वो जरा सुने। over here I was telling that even if x was increasing, the y will increase, but y is not belongs to real number. ऐसा नहीं है कि y तमाम वैल्यूज ले सकता है, y सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज लेगा जो 3 से ऊपर है। देखिए 3 से ऊपर है, 3 से ऊपर वाली वैल्यूज y लेगा, दैट्स इट। 3 से नीचे वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। ये 3 हो गया, ये देखिए। तो if I say x belongs to a real number, then what will be the range of y? अच्छा, ये भी एक नसीहत है, a guidance that I'm going to give. Whenever you have to find the range, and if you are stucking up, if you're not able to give the range, always visualize. Always visualize by drawing a diagram. Always visualize by drawing a diagram. कहीं मैंने ये बात लिखी होगी। In case of any confusion while finding the range, substitute few values of x as per the given domain, checking the trend in the given function and draw a rough sketch. पहले तो x की वैल्यूज डाल के आप विजुअलाइज करें, सॉरी x की वैल्यूज डाल के ट्रेंड चेक करें, बट फिर भी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि इफ x इज इंक्रीजिंग कभी तो y डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, कभी y इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ज्यादा बेहतर क्या है, try to visualize. I always tell my students, whenever you are giving the range, even when back so many years back when I was a student, this was the best thing that I used to follow, and alhamdulillah I never got stuck in finding the range. I always used to check out the trend, and I always used to visualize by drawing a rough sketch. So I always, although the marks are not much, रेंज निकालने के मार्क्स ज्यादातर 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, बहुत कर लें 1 मार्क, 2 नंबर से ज्यादा नहीं होते। हाँ, अगर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में भी करना है और ज्यादा कुछ वर्किंग है तो वो मार्क्स मिला देता है, लेकिन यूजुअली इफ इट्स अ प्योरली रेंज क्वेश्चन देन इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन ओनली, 1 और 2 मार्क्स मैक्सिमम, ज्यादातर 1 मार्क होते हैं। अब सर बोले सर 1 मार्क के लिए हम स्केच करें, तो आई ऑलवेज से एवरी डॉट काउंट्स, कतरा कतरा दरिया बनता है, हर कतरा काउंट करता है। तो 1 मार्क, यही 1 मार्क, this 1 mark converts your A star to a distinction, converts your A to an A star, converts your B to a A. तो every single mark counts. तो रेंज 1 मार्क है, लेकिन उसके आंसर को यकीनी बनाने के लिए, कंफर्म उस आंसर को लॉक करने के लिए कि आपका आंसर सही है या नहीं, या उस मार्क को पक्का करने के लिए विजुअलाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। In case of any confusion while finding the range, substitute few values of x in the given function and draw a rough sketch. तो ये तो मैंने एक आपको नसीहत कर दी। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल है, fx is equal to 2 times x minus 1 whole square plus 3 for x belongs to real number, and we have to find the range of f. क्या करना है, रेंज ऑफ f निकालनी है। तो रेंज ऑफ f निकालने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या कहा, find the coordinates of turning point. So these are the coordinates of turning point that we have found. The second step, substitute end points of domain if any. Sir, over here the domain is belongs to real number. This means there are no end points. ना कोई starting point है, ना कोई ending point है, कोई भी end points defined नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये सेकंड वाला नोट काम का नहीं, सिर्फ एक वाहिद नोट नंबर 1 की बेसिस पर रेंज देंगे। अब आप देखें, मैं आपसे कहता हूँ एक्स भी हो सकता है, एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है।
x1 भी हो सकता है, x1 से बड़ा भी हो सकता है, x1 से छोटा भी हो सकता है। बट कर्व देखकर बताएं कि y क्या हो सकता है। बताएं जरा, कर्व देखकर बताएं कि y क्या हो सकता है, y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, रेंज क्या हो सकती है, क्या जहन में आता है आपके। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। जिसने आंसर दे दिए बेहतरीन हो गया, वेरी गुड ईसा, वेरी गुड मोहम्मद हसन, परफेक्ट, वेरी गुड असद जावेद, नंबर 3, तीसरा बच्चा, ग्रेट माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। और पार्टिसिपेशन दें, बताएं और बच्चे आंसर बताएं, आंसर। बट ये नाम आपने थोड़ा सा गलत यूज कर लिया है, रेंज एक्स के नाम से नहीं दी जाती, रेंज डज नॉट इन्वॉल्व एक्स, रेंज वाई की वैल्यूज को कहा जाता है। बट यहाँ कहीं वाई नजर नहीं आ रहा, तो रेंज के लिए हाँ वो अक्सर वाई एक्सेप्ट कर भी लेता है। बट मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो वाई का मतलब किसकी रेंज, एफ एक्स की रेंज, जी एक्स की रेंज, या एच एक्स की रेंज, वी आर नॉट श्योर। तो ऑलवेज गिव रेंज विद द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के नाम से दें, एफ एक्स की रेंज एफ एक्स के नाम से दें। तो द रेंज ओवर हियर विल बी एफ एक्स greater than equals to 3. Very good. Hats off to all the students who have given the right answer. Kudos to all the students who have given the right answers. अब क्यों ऐसा, ये भी देख लें भाई, देखे ना भाई, कर्व ऊपर से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, कम से कम 3 तक पहुंचा, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम वैल्यू, 3 is the minimum value, 3 is the minimum value, y can never go below 3, so 3 is the minimum value, right? This is the minimum value. How can y be less than 3? The curve, the values of y were decreasing, decreasing. Suddenly the turning point came. The y value cannot go below 3. So high values of y are possible. The least value of y can be 3. Then as x increases after from 1, y constantly increases. X will increase, y will increase. Curve will go on and on and on. So there is no upper limit. There is no upper limit, but there is a lower limit. लीनियर फंक्शन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे एफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आंसर आता था, क्योंकि अपर लिमिट भी नहीं थी, लोअर लिमिट भी नहीं थी y की। बट इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन केस ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, लोअर लिमिट तो है, अपर लिमिट कोई नहीं। अच्छा, अब एफ एक्स ग्रेटर देन 3 क्यों नहीं है, एफ एक्स ग्रेटर देन 3 क्यों नहीं है। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू की कहानी है ना, ये जो है, चले वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे। एक चीज मैं बता रहा था कि इसमें एग्जामिनर भी कंफ्यूज था, पुराने कुछ सवाल अगर आप देखेंगे मार्किंग स्कीम या एग्जामिनर रिपोर्ट के आंसर, उसमें इक्वल्स टू अक्सर मिसिंग होता है, जबकि होना चाहिए। तो एग्जामिनर खुद इस पे थोड़ा सा जो है लीनियंट समझ लें, लीनियंट था, खुद भी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ था। व्हेन आई अटेंडेड अ कैम्ब्रिज ए लेवल मैथमेटिक्स वर्कशॉप few years back, I raised this point that if it has to be greater than equal to 3, then if someone is given greater than, then you will you penalize, and why are you giving greater than if it has to be greater than equals to in that case। तो वो खुद कंफ्यूज हो गया था, उसके बाद जवाब नहीं था। होता ये कि वो कुछ बाज औकात कुछ चीजों में ये लोग खुद कैजुअल हैं, लेकिन मैं बताऊं रिसेंटली जो नया एग्जामिनर चेंज हुआ है ना, उस वो ही इज वेरी पर्टिकुलर। अब जो कुछ सालों से जो पेपर आ रहा है उसके अंदर जब ग्रेटर देन इक्वल टू देना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही देना है। तो इंशाल्लाह व्हेन यू गोइंग टू मूव ऑन टू पास्ट पेपर्स, तो वहां हो सकता है कि ग्रेटर देन लिखा हुआ और आप बोले सर यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन क्यों है। तो आप मुझे बताइएगा वो सवाल, मैं आपको बताऊंगा जी हाँ यहाँ आंसर गलत है और आप सही हैं, और आपने अपने हिसाब से आंसर देना है, वरना आप ये पॉलिसी आप एग्जामिनर में ना इनकंसिस्टेंसी है। 2005 2010 में कोई पेपर अगर आया ना, तो उसके अंदर उसने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने पर पेनलाइज, ग्रेटर देन लिखने पर पेनलाइज नहीं किया, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लिख दिया, पेनलाइज नहीं किया। 2020 का एग्जामिनर जो आया चेंज हो गया, वो उसकी तबीयत डिफरेंट है। तो चेकिंग में देयर इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंसी। मेरी तबीयत है किसी एक चीज में मार्क्स काटने की, दूसरे टीचर की हो सकता है तबीयत ना हो। तो ह्यूमन बींग्स
आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो डज देयर नेचर डिफर। तो थोड़ा सा इस तरह के मामला रहते हैं, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगा इंशाल्लाह जो हमेशा आपको सिक्योर रखेगी, हमेशा आपको सिक्योर रखेगी, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा ना, तो उसमें एग्जामिनर का बाप भी आपके मार्क्स नहीं काट सकेगा इंशाल्लाह। एग्जामिनर विल नॉट बी एबल टू पेनलाइज यू इंशाअल्लाह। एंड व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर ऑलवेज रिसाइट रब्बी ज़िदनी, अल्लाह की मदद ले इंशाल्लाह खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और आपका मिनिमम पॉइंट है, तो देयर विल बी अ मिनिमम वैल्यू 3, देयरफॉर fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मैं सवाल ये कह रहा था कि सर यहाँ ग्रेटर देन 3 क्यों नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्यों है? क्योंकि बेटा क्या ये वन डोमेन में शामिल है? अगर ये वन डोमेन में शामिल नहीं होता, ये डोमेन होता आपका, एक्स इज ग्रेटर देन वन होता या एक्स इज लेस देन वन होता, ये भी देखें कितनी कमाल की बात है। डोमेन आपका एक्स इज ग्रेटर देन वन है, तो वन डालने पे 3 आ रहा है। ये आगे भी शायद बिलोंग्स टू रियल नंबर के आगे बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। लेट सपोज एग्जैक्टली यही सवाल होता, बट हमारा डोमेन होता एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज क्या होती? एक्स ग्रेटर देन वन, तो वाई विल बी ग्रेटर देन 3, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, एक्स लेस देन वन होता तो भी एफ एक्स ग्रेटर देन 3 होता। तो इसलिए मैंने कहा ना कॉन्सेप्चुअली आपने बहुत स्ट्रांग होना है, स्केच करके देखें। इफ एक्स इज लेस देन वन, लेफ्ट पे चले जाएं तो भी कर्व ऊपर ही जा रहा है। देन ऑल्सो एफ एक्स, दिस मीन्स वाई इज ग्रेटर देन 3, so whether x is greater than 1 or x is less than 1, fx will be greater than 3. Now if let's suppose there is x is greater than equals to 1, then fx will be greater than equals to 3. तो पता चला कि अगर टर्निंग पॉइंट का x डोमेन में शामिल है नहीं है, the x coordinate of turning point is not included in the domain, equals to की साइन नहीं है ना, if the x coordinate of turning point is not included in the domain, the y coordinate will not be included in the range. यहाँ equals to नहीं था तो यहाँ भी equals to नहीं, but when the x coordinate is included in the domain, जैसे कि equals to हमें बता रहा है, the y coordinate will also be included in the range. तो ये जो नोट है वो somehow आपके सामने मैंने रख दिया है, इसको मजीद क्लैरिफिकेशन मोर एग्जांपल्स के साथ देंगे आपको। If x coordinate of turning point is included in the domain, the y coordinate of turning point will be included in the range. So if 1 is included, 3 will also be included. If one is, if one is not included, 3 will also not be included. If over here 1 is included, 3 will also be included. सर मुझे कैसे पता चला कि यहाँ ये वन डोमेन में शामिल है? बेटा x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब दुनिया के तमाम नंबर्स, मेरे ख्याल से उस दुनिया के तमाम नंबर्स में वन भी एक नंबर है। तो इफ x equals to 1 is one of the numbers which is contained is in this domain, x belongs to real number also includes x equals to 1, this means y equals to 3 will be included in the range. So that is why over here we have seen an equals to sign. सही है, यहाँ तो बाकायदा इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू मैंने लिखा है। इसी तरह अगर लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 होता तो भी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता। एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 होता तो भी एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता। तो यहाँ तो चले बड़ा कॉमन सेंस है कि भाई यहाँ इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ इक्वल्स टू है तो यहाँ भी इक्वल्स टू है। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो देयर इज नो इक्वल्स टू, but there is x belongs to real number. So this is assumed that 1 is included in the domain. So if 1 is included in the domain, the 3 will also be included in the range. I think I have tried my best to clear this example. बाकी इसमें quadratic function की रेंज में मजीद भी तफसीलात हैं और मुझे आपसे और भी इंशाल्लाह आपको सिखाना है इसके अंदर। पहले एक क्लास में नहीं हो सकता सर, टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट बहुत है यार, फंक्शंस बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी सारी क्लासेस होंगी इसके ऊपर, तो माइंड बना ले इंशाल्लाह, टाइम पे कनेक्ट होना है। इवन इन द नेक्स्ट क्लास
Be very punctual. Be very punctual. I'm going to start on time, inshallah. So if the class is on 2:30 at 2:30 p.m., you have to be connected by 2:25. I'll try my best, inshallah, to start on time. नो इश्यूज. अगर आप लोग आज लेट हो गए, चले अल्लाह मालिक है, अपॉलॉजीज एक्सेप्टेड. बट मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस रिपीट करना, क्योंकि टाइम वैसे ही इतना शॉर्ट है. मतलब इतना कुछ सिखाने थे कि मैंने कहा ना, आई एम नॉट अ टीचर जो पेल के सिलेबस को खत्म कर दे. आई एम नॉट लाइक दैट. माई सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हेन आई एम डिलीवरिंग एट माई बेस्ट, व्हेन आई एम टेलिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स. आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत टाइम चाहिए मुझे सिलेबस कवर करवाने के लिए. उसमें अगर हम टाइम वेस्ट भी कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा. मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास अब हमारी 1.5 घंटे ही हो गई, तकरीबन 1.5 घंटे तो हमें लेनी ही पड़ेगी. हम 1.25 घंटे का टाइम तो हम रखा है, लेकिन हम 1.5 घंटा ही कर देते हैं. तो बस इसी तरह हम एक्सटेंड कर दिया करते हैं. तो यही समझ लें आपकी 1.5 घंटा हमारा थर्सडे होता है, डेट सैटरडे को होता है. तो बस इंशाल्लाह डेडिकेशन के साथ टाइम पे कनेक्ट होते रहे. आई गेस इट्स क्लियर. एवरीवन इज क्लियर? कुछ एक्नॉलेजमेंट्स रह गई हैं, मुझे बता दें सबको क्लियर है या नहीं. 1 2, हाँ कुछ. हमजा, आर यू क्लियर विद इट? यू हैव नॉट एक्नॉलेज. यस, प्लीज एक्नॉलेजमेंट दे दिया करें, मुझे नाम ना लेना पड़े आप लोगों का. चले, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.